Ayush, please keep your mic on mute. Thank you. I have something for you guys. I'll tell you. Okay, fine. 25/9/2020, the attendance of this class in biology was 10 out of 30, and in social science it was 24 out of 30, and in maths it was 17 out of 30. I have more. On Saturday, my class there was 24. In Hindi there were only 7 present. In Sanskrit there were 3 out of 5. In science there were 14 out of 30. Yes, I require explanations. Come on. Or do I need to ask for everybody's attendance sheet? I can do that also. That way I'll know who was present and who was not present. Yes, come on, bring it on. Those who were not present, I need your reasons. If your reasons are valid, then I will not call your parents and ask what was the problem and why did not you attend class. If you do not have a valid reason, then both of us have a problem. Yes, anybody, anyone. देखो, मुझे ना प्रूफ निकाल के तुम लोगों का पंचनामा करने में कोई मजा नहीं आता है, इसलिए मैं बताती हूँ. अपने लेवल पे बताओ. ओके, प्रियांशी's मीट वाज नॉट वर्किंग. फाइन. मैम. यस. राजवर्धन. यस. मैम सैटरडे की वो मैम पर डे सैटरडे और संडे की छुट्टी रहती थी ना मैम, इसलिए मैं सैटरडे को लोग ज्वाइन नहीं करता. फिर वो आयुष ने बताया था कि एक मिनट बैकअप अ लिटिल. सैटरडे को क्या होता है? सैटरडे और हर संडे की छुट्टी होती है मैम. पहले मैसेज आया था इसलिए. बेटा तुम्हें पता है वो मैसेज कितने महीने पहले आया था? मैम मैं तब से सैटरडे को ज्वाइन ही नहीं करता था. फिर आयुष ने बताया मीटिंग में आया नहीं रहा. Kudos, slow claps for you my boy. हम लोग इतना टाइम टेबल भेजते हैं, क्या उसमें सैटरडे की क्लास नहीं है? चेक नहीं किया आज तक. चेक नहीं किया? मेरी क्लास में तो आते हो तुम. मैम वो अगली क्लास में आया था मैम, उससे पहले नहीं आता था. This is utterly responsible. Utterly responsible. What makes you think Saturday off है? मेरा Saturday off नहीं है, तुम्हारा Saturday off कैसे हो सकता है? और सैटरडे को तो मैं क्लास ले रही हूँ इतने दिनों से. जब से टाइम टेबल बना है, I have class on Saturday and you are present in most of the classes. That was such a lame bahana. The lamest excuse in the world. Okay, fine. Aditi Jain, I think your reason is justified. Everybody else. देखो, मैं बुलवा सकती हूँ, मैं तुम्हारी सारी मीटिंग्स बुलवा सकती हूँ. मुझे 5 मिनट लगेगा, एक फोन कॉल करना है मुझे. Okay, Nilay, you are mostly present, so no harm, no foul. Yes, Myra, you and your brother are using the same phone for the meeting. Okay, so that is understandable that you might be missing some of the meeting, but I am hoping that you are attending those meetings on YouTube. बस ये 4 ही लोग एब्सेंट थे क्या? आयुष जैन का डेटा खत्म हो गया. हेमंत के घर पे फैमिली फ्रेंड्स थे. जानवी एज वेदर इश्यूज. ओके फाइन, एक्सेप्टेबल. और yes, there were a lot more people absent than these people.
your attendance is plummeting like anything. You are being highlighted every day I receive reports of your attendance. और अब तो ऐसा हो गया क्योंकि मैंने धमकी दे दी तो मेरी क्लास में तुम लोग आने की जहमत उठा लेते हो. You are not coming in the other classes. I do not know what kind of group mentality is coming out of this class, but I wish to be very extremely clear that not attending online classes is definitely not putting you somewhere in a good place. I have no idea what other teachers are doing in their class. In my class, I know that we still have syllabus to complete. We have a lot of multiple assessment to complete. It's not like we are passing time every day. If we were, I would have let you go. कि ठीक है, maybe you had something better to do. Work is happening, teachers are teaching, but you feel like कि नहीं अब बस बहुत हो गया. It doesn't work like that, my dears. It definitely does not work like that. And I am definitely going to raise this issue in the next PTM. और मैं सारी consolidated sheets बुलवाऊंगी. I am giving you this week. इस वीक में अगर मुझे वापस अटेंडेंस प्लमेट होती हुई दिखी, मैं कंसोलिडेटेड शीट्स बुलवाऊंगी पूरे महीने की. एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, I accept that there might be some problem. But if it is a pattern, if it is a habit, if it is a bad habit that you're cultivating, then it is not good. So everybody who is thinking like that कि अब online class का कोई मतलब नहीं है, सब time pass कर रहे हैं, you're wasting your time. But you know, how was that? There were only 10 people. Can you imagine? 10 out of 30, 20 of you were absent. Not everybody develops a genuine issue at the same time. Ma'am, I left the meeting at the half of the meeting gets over, ma'am, of the some network problem. ठीक है, अभी मैंने क्या बोला? अब जो हुआ हो गया. Let bygones be bygones. I am going to monitor your attendance in every subject from now on. और अगर मुझे यही pattern continued मिलता है, then I am going to reach out and take some steps. और जब ये होगा उसके बाद तुम्हारी शुरू से लेके आखिरी तक की सारी अटेंडेंस निकाल लूंगी मैं. इट विल टेक सम टाइम, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ एनर्जी. और अगर मेरी एनर्जी इस फालतू काम में कंज्यूम होगी, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक श्योर कि तुम्हारी एनर्जी किसी और काम में कंज्यूम करवाऊं. Your attendance is plummeting like anything. I am getting reports from all the teachers की class एकदम से join करना क्यों बंद कर दी. I told you, you are my pride. Is that how you're going to repay me? See, I don't know when the school will be able to open for good. I don't know what will happen. और तुम्हारा assessment कैसे होगा, तुम pass कैसे होगे, nobody can say anything. लेकिन ये चीज समझ लो, तुम कैसे भी करके पास हो जाओ यहाँ पे, तुम्हें नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स देने हैं. एंड व्हाट यू आर बिल्डिंग राइट नाउ विल डेफिनेटली अफेक्ट योर बोर्ड मार्क्स. 9th और 10th इस समय बहुत क्रूशियल स्टेज पे चल रहे हैं क्योंकि 10th वालों को भी इस साल बोर्ड देने ही पड़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली. इट डजंट मैटर हाउ द सिचुएशन इज गोइंग ऑन. And nobody knows when situations will normalize. This is our new normal. Make peace with it. There are a lot of ways to, like reduce your data consumption. I understand. I'm taking more classes than you are attending. I'm doing other work also online. I understand your problems. I have genuine sympathy for your issues and your concerns, but just avoiding classes altogether is not doing well for anyone. Fine, enough with the ranting. And today we were going to continue electoral politics. थोड़ा सा इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स देखेंगे, थोड़ा सा क्लाइमेट देखेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ स्टोरी टेलिंग के लिए लोग तैयार हैं. क्योंकि अगर नहीं हो तो फिर 0-0 मिलना शुरू हो जाएंगे. 2 को तो मिल ही चुके हैं. Other people can join the list. Be my guest.
From what we read here, the Election Commission or EC appears to be an important body that takes vital decisions on the conduct of elections. The Election Commission of India derives these powers from the Indian Constitution. Articles 324 to 329 of the Indian Constitution clearly state the provisions for free and fair elections. A free and fair electoral system builds a strong base for a democratic government. Hence, the people who framed our constitution attached great significance to an independent electoral system. The Election Commission was established in 1950 as autonomous electoral machinery. Until 1989, the Election Commission functioned as a single-member constitutional body with the Election Commissioner as its head. In 1989, it became a multi-member body comprising a Chief Election Commissioner and 2 election commissioners. The Election Commission has a hierarchical structure. As the chairperson of the body, the Chief Election Commissioner heads the commission. He is assisted by 2 election commissioners. Further, officers such as the regional commissioners, the deputy election commissioners, the research officers, the secretary, the under-secretary, and the clerical staff assist the commission in the electoral process. The Chief Election Commissioner and the other 2 election commissioners are appointed by the President of India on the recommendation of the Prime Minister of the nation. If on any matter the opinions of the Chief Election Commissioner and the other commissioners differ, then the decision is made as per the opinion of the majority. The Chief Election Commissioner serves a term of 6 years or up to the age of 65, whichever comes earlier. They enjoy the same status and receive same salary as the Supreme Court judge. The other officers are appointed by the President and the Governor, as the case may be, after consulting the Election Commission. Election Commission functions as an autonomous constitutional body that is free from any political influence. It is solely responsible for the elections to the legislatures and of the President and Vice President of India. The Chief Election Commissioner can be removed only through the process of impeachment by the majority votes of the Parliament. Other election commissioners and regional commissioners can be removed from office only on the recommendation of the Chief Election Commissioner. The salary and perks of the other election commissioners are same as the judge of a high court. During elections, the Election Commission employs government officers and takes complete charge over them. This ensures the independence of the body in carrying out the election process in a proper manner. The Election Commission rightfully enforces the Model Code of Conduct on the political parties and government officers
to ensure free and fair elections. The government officers should not participate in political activities. Politicians should not use the government facilities for election campaigns that they otherwise avail as a minister. Political parties should not intimidate or influence voters. They should not appeal to caste or communal feelings. Lastly, they should not use a place of worship for election campaigns. These guidelines for the government and political parties help in ensuring the legitimacy and fairness of the election process. So that concludes another chapter, electoral politics, and I think that concluded our DP as well. If you have any problem, any questions regarding the content of this chapter, feel free to ask. It was not something which was out of the blue. We have discussed a lot of these things here and there about the model code of conduct, about the election procedures, and what are the eligibilities of being a part of election. But again, if there is something, feel free to ask. नहीं तो फिर हम इसको भी wrap up मान लेते हैं. Again, I would suggest you Diksha app. Go ahead there. There are good question bank on Diksha app. आप उसमें से जो है question bank ले सकते हैं. You can take good questions. You can take their answers. That will help you. थोड़ा सा उसमें spelling errors होते हैं. कई बार कुछ structural errors हो सकते हैं. But the question quality is generally good. Okay. So let's begin with your multiple assessment. Any volunteers for storytelling? Volunteers nahi hai, then I'll start picking up. Okay, fine. Yes, Nakul. Yes, ma'am. Yes. प्रद्युम्न सिंह जी ने और उनके दोस्त जयचंद ने एक के हाथों मरने से अच्छा समझकर एक दूसरे को ही उसे मार दिया। ये कहानी उस वक्त की है जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज सिंह को युद्ध में हराकर उन्हें कैद में ले लिया था। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज सिंह जी के किले पे हमला किया था, उसकी आगे की थोड़ी बातें करेंगे। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान से आया था। भारत के हर राज्य को जीतना चाहता था और अपना सोना बढ़ाना चाहता था और अपने देश को भारत की तरह मालामाल करना चाहता था। लेकिन वह दिल्ली पे हमला करना चाहता, लेकिन वहां के जो सम्राट थे वह पृथ्वीराज सिंह जी थे। उनसे वह लड़ाई पूर्ण थे। उनसे आज तक कोई भी राजा नहीं जीत सका। जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली शासक
पृथ्वीराज सिंह पे हमला किया तो वह हार गया। उसी वक्त भारत की रानी, भारत के जयचंद की बेटी, भारत की चंद की बेटी संयोगिता का स्वयंवर होने का निर्णय हुआ, जिसमें जयचंद ने अपने जयचंद ने पृथ्वीराज को आने से मना कर दिया और उनके पुतले बनवा उनके सैनिकों की जगह रख दिया। और उनकी बेटी ने जब विरोध किया तो उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। उनकी बेटी ने अपनी दासी के पति के हाथों पत्र पृथ्वीराज सिंह जी को भेज दिया गया। जब पृथ्वीराज सिंह जी ने यह वह पत्र पढ़ा तो उनने उत्तर में यह लिखा कि तुम्हारी शादी मेरे साथ ही होगी। जब स्वयंवर हुआ तब सभी राजा आए, लेकिन पृथ्वीराज सिंह जी नहीं आए। तो जब संयोगिता को स्वयंवर में अपना वर चुना तो उनने जहां पर पृथ्वीराज सिंह जी के पुतले लगाए गए थे वहां उन्होंने उसके ऊपर उनकी माला चढ़ा दी। उसके पीछे से ही पृथ्वीराज सिंह जी कट हुए और उन दोनों का विवाह हो गया। उसके बाद उनके पिता जयचंद को बहुत क्रोध आया। उन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज सिंह जी के पर हमला कर दिया। यह बात सुनकर चंद्रवर्दानी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भी पृथ्वीराज सिंह जी के साथ मोहम्मद गौरी और जयचंद का सामना किया, लेकिन पृथ्वीराज सिंह जी उस युद्ध में हार गए और उस युद्ध में हारने पर मोहम्मद गौरी उन्हें अफगानिस्तान ले गया और अफगानिस्तान लेकर उनकी दोनों आंखें उनसे छीन ली गई। लेकिन जब चंद्रवर्दानी ने मोहम्मद गौरी से कहा कि तुमने भले ही दोनों आंखें छीन ली है, लेकिन वह अभी भी धनुर्विद्या में तुमसे ज्यादा निपुण है, तो मोहम्मद गौरी हंस उठा और चंद्रवर्दानी ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम उनकी परीक्षा ले सकते हो। जैसे ही मोहम्मद गौरी ने उसकी आज्ञा दी और पृथ्वीराज जी को शब्द वेणी बाण चलाना आता था, उन्होंने जैसे ही अपना बाण चलाया वह जाकर मोहम्मद गौरी को लगा। मोहम्मद गौरी की पूरी सेना को पृथ्वी जी ने तबाह कर दिया। उसके बाद चंद्रवर्दानी और पृथ्वीराज सिंह ने एक दूसरे को मार दिया, क्योंकि वह किसी भी दुश्मन के हाथों नहीं मरना चाहते थे। Yes, are you done with it? Nakul? Yes, ma'am. Okay, there are a few questions that I wish to ask. ये पूरे स्टोरी का सोर्स क्या था? हम क्या? स्टोरी का सोर्स क्या था? ये दिस इज अ हिस्टोरिकल स्टोरी, इसका सोर्स है क्या था? अरे बताओ। मैम पहले पढ़ी थी मैं। स्टोरी का सोर्स है पृथ्वीराज रासो। इट वाज एन एपिक पोएम रिटन बाय चंद बरदाई, नॉट चंद बरदानी। चंद बरदाई या चांद बरदाई। द फेमस पोएटिक लाइन 4 बांस 24 गज अंगल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान मच्चू को चौहान, समथिंग लाइक दैट।
It came from here because Prithviraj was blinded by Ghori, and he was blinded because during the first battle of Tarain, Prithviraj actually won, but he let him go because of the Rajput code of valor and honor. But Ghori came back with the bigger army. Then he captured him, he blinded him, but then also he was considered to, then he learned how to practice all his skills as a blind man. तो देखो ऐसा ही ये स्टोरी ना इधर उधर भाग गई. दूसरा ये कि डिक्शन भले हिंदी में था, ठीक है, चलो आई एक्सेप्ट हिंदी वहां पर, लेकिन डिक्शन इसमें भी प्रॉपर नहीं आया. एकदम ऐसा लगा नहीं कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ यू आर टेलिंग अ स्टोरी दैट यू नो. There is definitely a scope of improvement in this art, but ठीक है, at least you got the wheel going. Happy about that. Next, let's pick someone up. Marks. Marks. I'll give you marks after everybody is done because थोड़ी सी ना इसमें relative marking भी होगी, क्योंकि अगर तुम ही सबसे अच्छे निकले तो मुझे तुम्हें 10 देना पड़ेगा, पर अगर लोग तुमसे काफी अच्छे निकले then I'll have to think about it. For example, in class 10th, I gave 10 to 2 people, but today I had some exceptional presentations. So I felt compelled कि नहीं 10 तो इसे मिलना चाहिए. So by the end of it, I'll declare the final marks. But you are in the okayish category. You are not in the great category right now. But let's see how your classmates perform. Okay, Gunika, your turn. Okay, we have a casualty. Myra. If Gunika does not come back in the class, can somebody please relay to him that she'll get a 0? Thank you. My voice is not coming. Better now? I had a question. मुझसे एक चीज उस टाइम मिस हो गई थी. ये जो इसका रामा का ग्रुप है, नहीं, I have not missed it. Okay. It's somewhere in the back. Fine. गुनिका कोई बता देना. She's been marked absent. And yes, मैंने अगला पूछा था मायरा से. Yes, मायरा. Your turn. Story time. बेटा क्लास छोड़ के जाना कोई सोल्यूशन नहीं है. आई हैव योर अटेंडेंस. आई नो हु इज लीविंग द क्लास. और मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं भागूंगी तुम्हें मार्क्स देने के लिए. मेरे लिए तो बहुत कन्वीनियंट है 0 दे देना, और जस्टिफाई करने के लिए आई हैव वीडियोस. Myra, beta, can you hear me? Am I audible? It's your turn to present. Okay. Am I audible? Can somebody please confirm that I am audible? Yes, ma'am. Yes, then I am audible. Yes, ma'am. I am marking her absent as well. Somebody please tell her. देखो एक ने स्टोरी सुना दी है, मेरी एक्टिविटी तो शुरू हो गई है, बाकी सबको एब्सेंट मार्क कर दूंगी. नॉट माय प्रॉब्लम. यस, राजवर्धन, योर टर्न. And I am not prepared. यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. 0. तुम्हें लग रहा है कि यहाँ मजाक चल रहा है. भाई ये तुम्हारा असेसमेंट है, इसके तुम्हारे फाइनल में मार्क्स जुड़ेंगे. और बार बार नहीं करूंगी मैं ये सारी एक्टिविटी. यस, जानवी. Yes, ma'am. यस,
The floor is yours. Ma'am, today I am going to tell a story about Antoine Lavoisier. He is also known as father of modern chemistry. He was born in Paris in France in 26 August, and he died also in France. And when he was a child, he has great interest in chemistry and physics. And then he went to the University of Paris. Before summer vacation, in the last period, he slept, and when he woke up, he found that the whole school is locked. And then in the school, he found 8 elements and the law of conservation, and his name is given after the French Revolution, and he gave a great he gave chemical revolution also, and he is give history. He's very famous in the history of chemistry and biology. And when he came out from the college, he was very famous, and because of he found 8 elements in the only in a chemistry lab when everything is locked. And when he was found, he became very famous because in a small things he found such a great, just like a law of mass, law of conservation of mass. Thank you, ma'am. Okay, good enough. ठीक है. There is a scope for fluency here, but then again, the way others are performing, you are approaching fast towards very good marks here. The story was educative. This was something I didn't know. The uniqueness is definitely there. Okay, so I think we are done for today, and let's mark a few more other absent in the next class, because I don't think you're taking this seriously. I'm repeating again for everyone that this is your multiple assessment. ये बार बार नहीं होगा. एक बार you are marked absent, you will be awarded 0 in this one. And if you are marked absent because of lack of your preparation, lack of your attentiveness, it is definitely going to affect your marks in your other evaluations also. अभी केवल एक evaluation हुआ है तुम्हारा presentation का. अभी बहुत कुछ बाकी है. अगर इतने आराम से चलोगे, इतना carelessly चलोगे, I can't do anything for you. So that will be all for today. Thank you. Yes, Janvi, please, बोलो. Ma'am, I asked for Myra. He tells that उसको आवाज नहीं आ रही है, और मैंने बोला कि मैम ने तुझे एब्सेंट कर दिया है, तो उसने कहा कि नेटवर्क इशू की वजह से कोई भी उसकी तरफ अभी साउंड नहीं आ रहा. उसको ये नहीं पता कि आपने बोला था. Okay, fine. So you इसका can... संदेश है. Okay, yes. Thank you for the sandesh. Please relay that to her that okay, if there is a network problem, not her fault. I will consider that. नेक्स्ट क्लास में मैं उसी की स्टोरी से शुरू करूंगी. जिस रिले मेरा संदेश भी तुम उसी को पहुंचा दो. थैंक यू सो मच. फाइन. सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एंड सायरा.